और मैं एस्ट्रोनॉमी की क्लास आपसे लिया करूंगा ऑन सैटरडेज। एंड इंटरेस्टिंगली मेरे पास पीछे जो ये आप देख रहे हैं, दिस इज माय टेलीस्कोप। और हम बीच में अपने कुछ सेशंस में टेलीस्कोप से भी लाइव देखेंगे सूरज। ठीक है, तो इस टेलीस्कोप के सामने मैंने एक छोटी सी चीज लगाई हुई है। सो ये देखें, दिस इज अ सोलर फिल्टर। ठीक है, तो हम दूरबीन के आगे ये लगाएंगे और फिर हम आपकी स्क्रीन पे आपको लाइव सूरज भी दिखाएंगे। उसके अलावा हमारा जो कोर्स है एस्ट्रोनॉमी का, वी विल टॉक अबाउट ऑल द ग्रेट थिंग्स दैट आर इन द यूनिवर्स। सो अभी मैं आपसे कुछ चीजें भी शेयर करूंगा स्क्रीन पे, लेकिन उससे पहले आई वुड रियली लाइक टू नो कि आप लोगों का इंटरेस्ट क्या है एस्ट्रोनॉमी में, व्हाट डू यू लव अबाउट स्पेस। तो अगर हम प्लीज बारी बारी एक एक बंदा अपना माइक अनम्यूट करके प्लीज बता दें कि व्हाई डू यू लाइक स्पेस एंड व्हाट इज इट दैट यू लाइक अबाउट स्पेस। ओके, सो मेरी लिस्ट में अब्दुल वासे इज फर्स्ट। So, Abdul Wase, can you unmute your mic? Yes. Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam. The thing I love about astronomy and space is that there are unlimited amounts of planets we can explore, and there are so many things just in our solar system that we can explore, and it's such interesting things we can explore, and that's why I love astronomy. Very good, very good. Great. Abdullah and Vania. Assalamu alaikum, sir. Alaikum. What my interest in space is the how space was created, and I'm always wondering what could be out there. All right, ठीक है, thank you. Abiha Umar. My interest in space is like there are many stars you can explore and how they explode and the planets and their colors. Very nice, very nice. Aisha Halim. I think that's Aisha. So Aisha, why are you interested in space? I always love to explore Allah's creation. Wonderful, wonderful, mashallah. Hajra binte Hamza. Assalamu alaikum. Alaikum salam. My interest in space is that there's so many colors in space, like the galaxy and stars. I like them. Okay, great. Hajra, your display picture also has a lot of colors. So yes, there are a lot of colors in space. So we will be looking at those also. Hamza. Assalamu alaikum. My interest in space is like there's such a vast amount of matter in space, and there's like a lot of planets, and we've only discovered a few of them. There are even other planets we can live on besides Earth, and it's how big the universe is. Right, right. Perfect, perfect. Khadija Masood. Ji, Khadija. Space because like how the stars shine so much, and how the space works, the galaxy, the solar system, and all of those type of. Okay, perfect. Muhammad Yusuf Nasir. Black holes. Mm-hmm. How does black holes work? What's on the other side of a black hole? Is there a white hole? All right, very nice. इसको हम cosmology कहते हैं. So you're interested in cosmology. Okay, wonderful. Pakiza Faisal. Assalamualaikum, sir. Sir, I'm interested in stars because there are billions of stars in the solar system in space, and there are different beautiful colors. I love them. Okay, very good. तो colors बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद हैं space के. That's very good. Rahma Wajid.
जी रहमा. So if Rahma को थोड़ा टाइम लग रहा है तो we can move on to Usman Ijaz. ठीक है, are Rahma and Usman with us? Okay, is Ayan Ijaz with us? Yes, sir. So Ayan, what do you like about space? I would like to discover all the million stars in the space and all the planets that like we could live on them. Which of them? All right, perfect. ठीक है. So Rahma and Rahma is having some internet issues, तो कोई मसला नहीं है Rahma. That's all right. All right, so let's begin. Now, how many of you, and you can sort of raise your hand, या आप chat में बता सकते हैं with a yes or a no. ठीक है? So get ready. Open up your chats and get ready to type yes or no. ठीक है? I'm going to ask a question. Do you have a telescope? Okay, so we've started to get answers. Interesting. All right, ठीक है. So some of you have telescopes and most of you don't. ठीक है, great, wonderful. तो अब तो और भी मजा आएगा because telescope का experience कुछ लोगों के लिए नया होगा. That will be even better. All right. Now, I would like to share my screen with you, and we would be going through some slides. और साथ you can ask questions. And you can ask your questions in the chat. So then मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा, and then at the end of every class, you can unmute your mics and ask questions through your voice. ठीक है? So these are some house rules, and let's begin. So what you're seeing on the screen right now is a bright star and some people on the in the desert that are riding on camels, और वो उस सितारे को देख रहे हैं. Now what happens sometimes, जिस तरह आप लोगों में से कुछ लोगों ने कहा कि उनको exploding stars पसंद है. What happens is that sometimes आसमान में where there is no star, एकदम एक सितारा निकल आता है. बिल्कुल इस तरह, a very bright star. And then people get afraid, people get scared, because usually stars do not change. तो एकदम ये सितारा कहाँ से आ गया? And this has been happening since as long as people have been on the planet. इसको हम नया सितारा कहते हैं. इसको हम nova stella कहते हैं. Nova is new, stella is star. तो शुरू से जब से इंसान थे, आपके दादा, आपके नाना, आपके परनाना, आपके परदादा, and आपकी जितनी भी फैमिली का शुरू है, ठीक है, if you can figure out the start of your family. तो हजरत आदम के बाद जब ज्यादा लोग दुनिया में फैलने शुरू हो गए, मुख्तलिफ इलाकों में फैलने शुरू हो गए, तो कुछ इलाकों में रात होती थी इंसानों के लिए और कुछ इलाकों में दिन होता था, राइट? सो जैसा अभी यहाँ पे दिन है तो अमेरिका में रात है, तो ज्यादा लोग रात के वक्त तारों को देखना शुरू हो गए, ठीक है. एंड देन पीपल वुड स्पॉट स्टार्स लाइक दिस, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं. एंड देन उसको पेपर नहीं होता था, दे वुड राइट इट डाउन ऑन रॉक्स, और उस पे वो ड्राइंग्स बनाते थे, उस पे वो जोर जोर से पत्थर रगड़ के बस पिक्चर बना देते थे कि ये एक सितारा आ गया. एंड सो एस्ट्रोनॉमी, यानी looking up at the sky and sort of getting information from there, knowledge from the sky, started when we were very young, when the human population was very young. Astro is star because हमें आंखों से हर चीज star नजर आती है, and Nomi is sort of grouping things together, making a good arrangement of knowledge. ठीक है? So astronomy. Now, याद रखें, this is important. It is not the study of anything that is within Earth का atmosphere. ठीक है? That is geography.
So, and geology. Astronomy is above the atmosphere, which is outer space. Okay, eight things that I would really like to share with you all. So whenever I go out to the public, schools mein, universities mein, parks mein, and I take this telescope with me, let me bring it a little closer. Okay, ye dekhein. So whenever I take this telescope with me to the public, जब लोग इससे देखते हैं ना, so they give me certain types of reactions, and I would like to share those reactions with you. These also include kids and adults and mothers and parents and fathers. Some of them say, अच्छा, okay, चांद दिखा रहे हैं आप, okay. कुछ कहते हैं अच्छा है, you know, कि चांद के ऊपर, wow, what are these circles on the moon? अच्छा है. And then many of them say, wow. They look at Saturn and uski rings, and they look at galaxies and these colorful nebula. So they say, wow. But I want you to type in the chat कि जो सबसे ज्यादा मुझे reaction मिलता है, ये जो red में है, what do you think people say the most when they look through a telescope? Okay. अब्दुल्ला कह रहे हैं कि लोग कहते होंगे माशाल्लाह. हमजा कहते हैं कि अमेजिंग. खदीजा also says कि people should say amazing. Rahma says stunning. Okay. Mashallah, amazing. I wonder what that is, says Yusuf. Great, says Hajra. ठीक है, all right, thank you. Now let me reveal. और अब आप वापस स्क्रीन पे देखना शुरू करें. Let me reveal what do people actually say. सबसे ज्यादा. You know what? ये देखें. People say इसका क्या फायदा है? Why are you showing us this? So ये सुभान अल्लाह माशाल्लाह सबसे ज्यादा लोग नहीं कहते. लोग कहते हैं कि इसका क्या फायदा? So yeah, exactly, Abdullah and Manya. That is what my reaction is. So आज इस कोर्स में हम ये भी देखेंगे कि इसका क्या फायदा है. ठीक है? Now to begin, yeah, at least to sort of share some part of that conversation with you right now. याद रखें, अल्लाह ताला ने जितने भी laws बनाए हैं ना यूनिवर्स के लिए, ठीक है, law of gravity, law of quantum gravity, quantum physics and पता नहीं क्या क्या, हम उन laws को हमारी समझ के काबिल भी बनाया. ठीक है? तो जो अल्लाह ताला ने ये अमेजिंग यूनिवर्स बनाया ना, इसको समझने की हमें कैपेसिटी भी दी है. Because Allah Ta'ala has given us a brain and a good brain. तो इसलिए हम astronomy करते हैं, इसलिए हम astronomy कर सकते हैं, something as complicated as astronomy. Now you can tell that astronomers are good people, right? But there's a big but here. Sometimes people get this part right, but this part wrong. And they call astronomers astrologers. Or sometimes people also think कि हम astronomist हैं. So I must tell you that astrologer नहीं बुलाते astronomer को, ठीक है? Astronomy is not astrology. And astronomers are not astrologers. Astrology वो होता है जिसमें आप हाथ की लकीरें देखते हैं और आपकी बर्थडे से और हाथ की लकीरों से you figure out कि let's say मिस आयशा का वीकेंड कैसा गुजरेगा, या मिस आयशा क्योंकि प्लैनेट्स इधर हैं और स्टार्स इधर हैं तो मिस आयशा के पास अगले हफ्ते खुशी होगी या क्या होगा. So that is not astronomy. So we will not be talking about that stuff. ठीक है? हम astronomers की बात कर रहे हैं. Okay? Okay. Hamza is like 100 question marks. Hamza is confused. ठीक है? So हम कहाँ पे थे? हम यहाँ पे थे. It is the study of the physical universe beyond the Earth's atmosphere. Now, before we proceed further, I would like to ask, बल्कि request, आपके ज़हन में कोई भी सवाल हो ना, तो आपने पूछना है.
because astronomy के अंदर जब मैं लोगों में जाता हूँ, when I give talks and talk to people, both old and young people, and the people of my age, which is young people, so वो सब लोग मेरे से ना, astronomy somehow causes people to ask very deep questions, religious questions, spiritual questions. तो आपने भी घबराना नहीं, आपने मेरे से पूछना है. हो सकता है मुझे जवाब ना आता हो, लेकिन एटलीस्ट हम एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं. ठीक है? सो हाजरा ने भी सवाल पूछा है. हाजरा, वी विल गेट टू योर क्वेश्चन. ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, व्हाट इज दिस? चैट में कैन यू गाइज सजेस्ट व्हाट आर वी लुकिंग एट? Comets, fireworks, starlight, nebula, comets, nebula. Okay, मोहित, ठीक है. तो मोहित, what do you think ये क्या है स्क्रीन के ऊपर? So this is exactly जैसे आपने कहा, पाकिज़ा फैसल ने कहा, स्टार्स, स्टारलाइट. ठीक है? तो एस्ट्रोनॉमर्स गैलेक्सी को पकड़ के ऐसे ऐसे करके देख नहीं सकते कि यार इसके अंदर क्या है, यार इसके अंदर. तो वी कांट डू दैट. वी कांट होल्ड द सन या पिक इट आउट ऑफ द स्पेस एंड होल्ड इट एंड सी के उसको खोल के देखें कि अच्छा सूरज के अंदर ये. ऑल वी कैन डू इज यूज दीज टेलीस्कोप्स टू गैदर दिस. ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लाइट. That is all that we can do. अल्लाह ताला ने हमें इस कैपेसिटी में इतना चैलेंज किया हुआ है ना, कि अल्लाह ताला ने कहा कि तुम वहां जा नहीं सकते तो तुम अपनी अकल लड़ाओ. तुम कैसे फिगर आउट कर सकते हो मेरी बनाई हुई चीजों के बारे में? तो वी यूज टेलीस्कोप्स, वी कॉल दीज लाइट बकेट्स ऑल्सो. ये रोशनी कलेक्ट करने की बकेट होती है एक तरह से. And we use telescopes to figure out space. Hamza पूछ रहे हैं, what is the most powerful telescope? So Hamza, right now, the most powerful telescope, and I'm going to write it down so that everybody can see, is James Webb Space Telescope. Okay, that is the most powerful telescope, and it is in space. So Earth पे नहीं है. All right. And पहले एक सवाल पूछा था हाजरा ने, why are stars bright? Because Hajra, stars are very hot. That is why they are bright, and we'll talk more in detail about stars. So this, what you're seeing right now on the screen, is a short video that shows you how lenses, these pieces of glass aap keh le, they bend and twist and turn light. यहाँ पे mirrors भी हैं, यहाँ पे lens भी हैं, और आप उनमें से एक ये रोशनी की beam देख रहे हैं, how that beam is, guided towards a certain part. That is exactly what astronomy के अंदर telescopes do. ठीक है? So Abiha asks, why are some planets colorful? Because they are made up of different things. And abhi main chote chote answers dunga. We'll talk in detail about them in the next classes. Abdullah and Vanya Shahriyar पूछ रहे हैं, why are stars hot? What does the heat have to do with stars being bright? That's a brilliant question. Stars are hot because उनके अंदर atoms टूट रहे होते हैं. That creates a lot of heat. We'll talk about this in more detail, but that's a great question. Fusion causes stars की heat. All right. So telescope दो लफ्जों का mixture है, which means tele, far, scope, see. So telescope helps you see far away things as if they were nearby. Now there are three types of telescopes, and I want to talk about them first because ये एक सवाल हर एक के ज़हन में होता है. This is a refractor telescope that you can see. ये सबसे common है, जो आपने देखा होगा pirates भी use करते हैं movies के अंदर, right? ऐसे करके आँख के साथ लगा के. So these sort of tube-like telescopes are refractors. They bend light through lenses.
ठीक है, तो रहमा जो वीडियो थी ना, that was just a demonstration of how light can be reflected and sort of curved by the use of mirrors and lenses. ठीक है, we were not showing how telescopes work. We were just showing how light can be sort of bent and made more narrow, made more wide through the help of lenses. एक है reflector. So ये जो पहले आपने देखा था refractor, refractors are many people's first telescopes because they are simple and हल्के होते हैं, and ये जो छोटे वाले होते हैं जिस तरह का ये आप देख रहे हैं, इसको छोटा वाला कहते हैं, ये जरा सस्ते भी होते हैं. But then if you want to get a bigger telescope, so you go for a reflector telescope, जैसे ये है. This is a reflector telescope. It has a mirror inside of it. I hope I can show that mirror to you. वो देखें. Do you see that mirror inside? ठीक है? Yes. Yes. Perfect, perfect. So it has a mirror over here at the end. ठीक है? और उस मिरर के ऊपर लाइट लगती है और फिर एक और मिरर पे लगती है. So it reflects light. Sir Isaac Newton, इनका आपने नाम सुना होगा, उन्होंने ये डिजाइन ओरिजिनली बनाया था. ठीक है, बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स दैट वर इन दिस डिजाइन. ये जो रिफ्रैक्टर के अंदर ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके अंदर अगर आप मुझे देख रहे हैं तो थोड़ा सा सर रोशान यहाँ पे भी आपको नजर आएंगे रेड कलर के, थोड़े से सर रोशान आपको यहाँ पे भी नजर आएंगे ब्लू कलर के. सो इमेज इतनी क्लियर नहीं होती, लेकिन रिफ्लेक्टर में ये मसले नहीं होते. ठीक है, तो आई एम जस्ट गोना थ्रो आउट अ फ्यू टर्म्स. आपके मेरे लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो इसको नोट कर लें. All right, so this is just for your information so that you know we learned something really new from this course also. And आप सब adults, आप सब बड़े हो रहे हैं, आप सब बड़े हैं, so we can talk about details, right? Sorry about this. So color aberration refractors में होती है, reflector में नहीं होती. लेकिन reflector के अपने मसले हैं. जो सबसे अच्छा डिजाइन है वो ये है. It's a very weird name, catadioptric telescope. लेकिन इसको हम simply कहते हैं compound telescope. So Abdullah Mani, आपका सवाल है, please go ahead. Did you write something on the previous page? I did actually. I wrote James Webb Space Telescope. I couldn't see that. Okay. Do you want me to write that again? No, it's okay. Okay, चलें. Great. So ये जो compound telescopes है ना, ये ज़्यादातर astronomers के पास होते हैं. In fact, I might get one soon. ठीक है, तो exactly यही वाला जो आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर का. These are shorter. इनकी ट्यूब्स इससे भी छोटी होती हैं, but they are very good. So अगर आपने कभी अपने लिए लेना हो for a long lasting purpose, to get a compound telescope. ये थोड़े महंगे होते हैं. So ये 3 types हैं. I would recommend the third one. And so there are so many branches of astronomy. People can talk. I mean, we can have a conversation हर एक branch के ऊपर. But we're not going to talk about a lot of these things here. Okay? We're just going to talk about very basic things. Lekin based on your questions, we can go into detail. Okay. Also, लोग पूछते हैं सर क्या फायदा है? Well, there are so many things that have come out from research in space and astronomy. यहाँ पे कुछ चीजें मैंने लिखी हुई हैं. Obviously, thousands में हैं वो चीजें जो direct result है of research in space. जैसे कि आप solar panels देख रहे हैं, तो solar panels was a result of space research because space में solar panels सबसे पहली दफा use हुए थे. And so there are other examples also. Astronomy is the oldest science. ठीक है? It's the oldest science. Why? Because अल्लाह ताला ने already आपको ये 2 telescopes दिए हुए हैं. ठीक है? तो आपको और किसी instrument की जरूरत ही नहीं है. All of you were always born with 2 telescopes. So you could always see stars. And you could always talk about stars because रोज रात को तारे नजर आते हैं. Right? And also humans were always attached with the night sky because it never turns off. I mean, it's always there.
So अगर clouds नहीं है तो it's always there. This is a typical night sky. अगर आप किसी बहुत dark area में चले जाएं और आप वहां से sky को देखें. So कार्ल सेगन कहते हैं कि हम दूर दराज चीजों को एक certain अपील के साथ देखते हैं, certain romance के साथ देखते हैं कि हमें दूर दराज चीजें attract करती हैं humans को. And so exploration is in our genes. अल्लाह ताला ने हमारे अंदर exploration डाली भी है. तो आप जब छोटे थे तो आप भी खिलौनों को तोड़ते थे और आप देखते थे कि उसके अंदर क्या है, राइट? मैं भी करता था, मैं साइशा भी करती थी. और अभी भी आप जब बड़े हैं तो you want to know more. That is why you're part of this class, and you would go back and maybe tinker around with your iPads or phones and some toys, you know. So we like to explore. And I also claim that to look up at the universe is to look within ourselves. Why do I say that? Because my claim is that we all are. यानी आप, मैं, आपके अम्मी अब्बू, आपके दोस्त, आपके teachers, मैं, Miss Aisha, everybody. We are, this had to say stardust, but it says astronomy. So we're not astronomy. We are stardust. And I'm going to write it down here. We are stardust. Okay. What does that mean? We'll talk about that later. Okay. Okay. Comments time. Abdullah Vanya says, some people think that when day comes, the stars disappear, but actually you can't see the stars because light from the sun. Stars are always there. That is right. सितारे हमेशा ऊपर होते हैं. So in this course that we're going to do over the next few months, हम इन चीजों के बारे में बात करेंगे, ठीक है? We will talk about the history of astronomy also in a very different way. आमतौर पे history is a little boring, but we'll talk about it in a very fun way. हम बात करेंगे कि ये जो आप structures देख रहे हैं जिनको क्या कहते हैं, पत्थरों को जो ये पड़े हुए हैं. Does anybody know? ये जो स्क्रीन पे आपको पत्थर नजर आ रहे हैं जिसके इर्द-गिर्द लोग भी खड़े हैं. This is somewhere in the UK. I think it's Easter Island, something like that. Okay, try again. It's not Easter Island. But it is in the UK, right? It's in the UK. Yes. My home. ठीक है. Can anybody type in the chat? क्या है ये? And if you don't know, you can just type no idea. It's all right. It's grass. Okay, great. So Abdullah Wase and Pakiza, they like history, which is great. Okay, so this is called Stonehenge. Okay, Stonehenge. And we think this was कुछ लोगों के पुराने दौर में जो लोग रहते थे उनके लिए this was like their observatory, an astronomy observatory. They would figure out सूरज and moon की positions and seasons की placement because of this. Remember, people built this. वो आप देख रहे हैं साथ साथ लोग खड़े हैं and look at the size and scale of people there. Look at the size of these stones. कैसे किया हमने, लेकिन किया. We'll talk about the night sky. We'll talk about how you can learn about the night sky through just your eyes. Telescope नहीं भी है तो खैर. Okay. So naked eye astronomy कहते हैं इसको. We'll talk about that. And we will talk about things that you can see from your own backyard, from Islamabad, from जहाँ से भी आप देख रहे हैं. कुछ stars बड़े bright और बड़े famous हैं, हम उनके नाम देखेंगे. हम कुछ weird structures देखेंगे जो आसमान में actually नजर आते हैं. For example, there is 37 written up there. Stars ने लिखा हुआ 37. That's so weird. There's a coat hanger in the sky. So वो हम सब देखेंगे इसमें. Well, we won't be able to watch the moon unless Miss Aisha हम कोई एक session रख सकें जो Saturday को evening में हो, but otherwise हम सूरज देखेंगे. Let me see अगर किसी की कोई chat है. Okay, no comments yet. We'll talk about stars and we'll talk about the sun. We'll talk about how sun will die, how the sun was formed. अभी सूरज के अंदर क्या हो रहा है. We'll talk about stars जो हम आसमान में देखते हैं. Why do they have different colors?
why are certain stars brighter? Are they closer या कोई और वजह है? And what are star clusters? Or why do what is the common thing between a star and an onion? तो हम ये बातें भी करेंगे, stars and suns. And we'll also talk about different solar systems that are out there. Hamza is asking, when will the sun die? So Hamza, the sun will die after about 5 billion years, but it will not become a black hole because the sun is not big enough. छोटा सा सितारा है हमारा यार, बड़ा नहीं. We'll go through the solar system. This is my favorite class because you get to see these different balls and these different colors and amazing, beautiful images. We'll talk about how different spacecraft are exploring each planet. We'll see unique pictures of that planet, unique and beautiful pictures from that planet taken by spacecraft. And we'll talk about उस planet की, हर planet की telescope से दिए जाने वाली तस्वीर from a small, medium, and a large telescope. So you get a brief overview of the entire solar system. और Pluto की भी हम थोड़ी सी बात करेंगे इसके अंदर. We'll then jump on to galaxies. और हम अपनी galaxy की भी बात करेंगे, the Milky Way. And we'll try to understand why galaxies are like this. Okay? Why do they look spiral in shape? Okay, a few comments. Pluto is not a planet. Okay, Hamza, okay, great. But we will learn why, and maybe Pluto dobara planet ban jaye. Okay, so there is some discussion going on in the international community. Abdullah कह रहे हैं, अब्दुल्ला अनवानिया कह रहे हैं कि सूरज तो डे ऑफ जजमेंट पे नहीं डाई होगा. तो अब्दुल्ला अनवानिया, we don't know, right? Day of judgment का हमें नहीं पता, right? किसी को भी नहीं पता, remember? It won't die. So the sun, yeah, the sun will eventually, जो जिस तरह अभी नजर आ रहा है वैसा तो नजर आना बंद हो जाएगा. So we'll say that this type of a sun will die, but we already know उसका time, right? We know कि लगभग 5 अरब साल बाद होएगा. लेकिन अल्लाह ताला ने कहा है कि क़यामत का किसी को नहीं पता. So that means कि सूरज की death is, should not be क़यामत. So क़यामत is something that only Allah Ta'ala knows, right? All right. So, सबसे favorite topic, black holes. So हम black holes की बात करेंगे. We will see कि black hole क्यों बनता है. Black hole है क्या? Is it a star? Is it just something that you fall into? Yeah, there is something else. इसके अंदर कोई और universe तो नहीं है. Does it lead to a white hole? And what has anybody ever, has any spacecraft ever gone into a black hole? And हम एक lucky participant को, एक lucky student को black hole के अंदर भी फेंकेंगे. ठीक है? तो उस class के end में one lucky person will go into the black hole. Yes. Abiha is commenting that Pluto is not a planet because planets clear their surrounding and Pluto doesn't. ठीक है Abiha. Yusuf कहते हैं, The person won't be lucky if he goes into a black hole because then he will die at the instant. but this is a safe black hole. ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं होगा जो भी जाएगा. ठीक है, so we'll take care Okay. of that. Then I'll go. All right. And then we'll also talk about aliens. Aliens हैं कि नहीं? What does it even mean to say कि aliens हैं? What would they look like? Would they look like movies wale aliens? Would they look like us? Would they look like a cat? So we'll sort of figure that out. Okay. And we'll mostly be doing it in the light of science. Science की knowledge की base पे. How can we think about aliens? ठीक है? मैं साथ-साथ आपकी comment भी देख रहा हूँ. Abdullah Anwania says that they say that it depends on what we call aliens. I watched a lecture about it. Great. ठीक है. And finally, Aliens are creepy, but not creepy. Okay, I mean, we could be creepy to some aliens, right? So we don't know. They might see us and then what? Yeah. So आखिर में हम बात करेंगे cosmology की. Cosmology is, as you can see, it's everything in the universe.
And cosmology is particularly the universe at the largest scale. So इस क्लास में हम बात करेंगे बिग बैंग की. इस क्लास में हम बात करेंगे यूनिवर्स. Will the universe die or not? We'll talk about क्या एक यूनिवर्स है या मल्टीवर्स है, मल्टी यूनिवर्स है. And where is Earth and where do we? Multiverse is in Spider. Sorry? Multiverse is in Spider-Man. Well, they took that idea from astronomy. Okay, so we'll talk about the actual idea जो Spider-Man ने borrow किया था. ठीक है? All right. All right. So अब मोहम्मद यूसुफ कहते हैं, I hope black holes take me to a planet where junk is healthy, games are also healthy, and studying is unhealthy. Yeah, that's really good. That's a good idea. A very That's good a idea. great Very good plan. idea. It is. That is not a very good idea. That's a black hole a lot of people would like to go in. I love to go in that. It's very fun. It'll be very fun. I wouldn't want to go in that. Yeah, because we'll be alone. Well, I mean, black holes के अंदर क्या है? We don't know yet. That won't matter because you can just play games whenever you want, no studying, and eat junk food, and it'll be so fun. Yeah, but after some time you will get bored and start missing your family. All right, ठीक है. So अभी comment में मैं देख रहा हूँ कि aliens do not exist. यूसुफ कह रहे हैं only Allah knows. Absolutely, यूसुफ. तो हर चीज को completely तो हम नहीं जान सकते, right? हर चीज का complete knowledge किसके पास है? Allah Ta'ala. Right. ठीक है. So God knows everything, and that is our belief. तो अगर हम थोड़ा सा जान सकते हैं तो हम सिर्फ वो जानते हैं. ठीक है. तो we will try to see कि हम थोड़ा सा जान के aliens के बारे में क्या सीख सकते हैं. That is our मकसद. Not के let's go out and sort of मैं अबीहा को भेज दूं उस स्टार पे and Shahriyar Vania goes to that star and they figure out aliens हैं कि नहीं, right? So we try to utilize जो अल्लाह ताला ने दिमाग दिया in order to understand कि अल्लाह ताला ने हमारे अलावा की और मखलूक बनाई है, कोई और बैक्टीरिया तो नहीं बनाए, कोई और sort of कहीं कोई fish तो नहीं है. So we'll try to see. There are many bacteria. हाँ, तो we'll see. We'll talk about that. So end पे मैंने आपके सामने ये stardust लिखा हुआ है. Let me leave you with this thought end पे कि because आज की class is sort of an introductory class, so हम किसी detail में नहीं जा रहे. But let me tell you something really interesting. So मुझे बताओ and write it down in the chat. So now I can see the chat also. So human body सबसे ज्यादा किस चीज की बनी हुई है? हमारे अंदर सबसे ज्यादा क्या चीज है? मिट्टी की. मिट्टी की. Water. Water, that's right. So the human body is almost 70% water. ठीक है. अच्छा, अब ये बताएं, वैसे by the way हम अगर पानी है तो why aren't we jelly, right? हम 70% water हैं, okay? We've got bones and we've got what do you say, muscles and skin, so Yeah. we're not wobbly. Exactly. अगर हमारे अंदर bones ना होती तो हम क्या होते हैं? Very wobbly. We won't be able to walk, We and could not then get what we then- would be in the ground. then muscles would be useless because All right. bones support Okay. muscles. ठीक है. So I'm going to focus on the chat. So आप अपना input chat में भी दें ताकि everybody feels कि all of them are being treated fairly. So skin, bones, stardust, bones, water, cell, water. Now water के अंदर, because we are mostly water के अंदर सबसे ज्यादा क्या चीज होती है? Which element? What material is water made up of? More water. Hydrogen, Hamza, that's exactly right.
So Hydrogen oxide. yeah, right. So H2O है ना, तो ज्यादातर हमारे अंदर इसका मतलब है H है, हाइड्रोजन है. Most of our body has hydrogen atoms in it. And then So, then there's oxygen too. and then there's oxygen, right? So hydrogen के बाद हम ज्यादातर oxygen के बने हुए हैं because it's H2O. And then ये जो skin है, ये जो बाल हैं, ये कार्बन है mostly. Then उसके बाद हमारे दांतों में कैल्शियम है, हड्डियों में कैल्शियम है, और हमारे DNA के अंदर नाइट्रोजन है, फास्फोरस है. Okay, but why are we talking about this? Now this is something interesting. Because there's nitrogen and water and oxygen all are out in space. Yes. So interestingly, आज से कोई almost 80 years पहले, बल्कि 60 years पहले, astronomers ने एक research की थी and they learned कि जो हमारे बनने का order है, like hydrogen, oxygen, carbon, nitrogen, the same order exists in the universe. The universe के अंदर the universe is also mostly made up of hydrogen, then oxygen, then carbon, then nitrogen. So we are the same composition as the universe. And then later they looked at stars and we learned कि ये सब material oxygen बनाने की जो हांडी है ना, जो kitchen है, उसको stars कहते हैं. So oxygen stars में बनती है, hydrogen stars में बनती है. ये carbon जो आपके पास है, जो calcium आपके दांतों में है, ये सितारों में बनी थी. And then those stars which are long dead, जो ये अपने पेट में ये सब कुछ बनाते रहे थे, जब वो फट गए तो ये सब चीजें बाहर स्पेस में फैल गईं. And eventually after billions of years ये चीजें अर्थ पे गिरी, अर्थ की मिट्टी का हिस्सा बनी, and वहां से life started and humans were made. So yes, I don't think that's exactly true, because some people say that it's not true because Allah was the one who made everything. So Abdullah and Vanya, you're absolutely right. Now listen, here's a way to think about this. ठीक है, हर चीज अल्लाह ताला ने बनाई है, right? Yeah. Right? तो ये लैपटॉप, ये टेलीस्कोप एक तरह से हमारे जरिए बनाया तो अल्लाह ताला ने है ना. Yep. तो हम हर जगह खड़े होकर ये तो नहीं कहते कि अस्सलाम वालेकुम, आज इस लैपटॉप जो कि अल्लाह ताला ने बनाया है, इस पे हम आज एक प्रेजेंटेशन देखेंगे जो कि अल्लाह ताला ने बनाई है थ्रू द टेलीस्कोप, जो कि अल्लाह ताला, इट इज ऑब्वियस कि वो अल्लाह ताला ने बनाया, राइट? सो अल्लाह ताला ने वो इनडायरेक्टली बनाया क्योंकि उन्होंने हमें बोल दिया कि हम सोच के वो बना लें. We made that. So- Allah so- didn't so- make the laptop is because He gave us the knowledge to make one. So exactly you what wouldn't really say that Allah. Exactly, that's what I'm trying to say. So hear me out, Vanya, कि Abdullah and Vanya, कि this laptop is made up of some metal, some plastic, right? Yep. Yep. वो elements make up that plastic and metal. Yep. वो elements बनाने के लिए सितारे हैं, Yes. और सितारों को बनाने के लिए यूनिवर्स है, यूनिवर्स को बनाने के लिए Allah. Yes, Allah. so that's why I said that Allah made the computer, the telescope indirectly. Indirectly through laws that He created. ठीक है? Okay, but it He doesn't created like, stars, so like star give us oxygen and stuff. So he created things that we used to make other things. Right. So मुझे एक क्वेश्चन है मेरे पास कि अगर आपके बर्गर में, अगर आप बर्गर खा रहे हैं और आपके हाथों में केचप लग गई है, तो आप क्या कहेंगे कि वो केचप कहाँ से आई? from the burger. From plants, from the tomato. राइट, बट आप ये कहेंगे कि वो बर्गर, वो केचप बर्गर के अंदर से आई ना, जो सबसे इमीडिएट लिंक है, राइट? Yes. Okay. So when you see ketchup on your hand, you can tell कि हाँ, ये ketchup की immediate source was the burger. Our burger ka immediate source was the chef.
was the chef, and you can go back and sort of वो Yeah. हर चीज पे eventually it will land on Zahir, obviously the creator. But अभी हम बात कर रहे हैं what you can see, what you can observe. So that is science, ना? तो science में रह के हम बात करेंगे ना, because So would this be otherwise. like science fiction? Sorry. Does this include science fiction? Well, science fiction has ideas जो कि sometimes reality पे based होते हैं, sometimes वो completely man-made होते हैं. Okay, but So don't science, you this think that the Big Bang Theory was actually true because there was no bubble in space and then it popped and then the universe was made because Allah just said B and then everyone just came, everything came. good. बेटा, I really like जो आप ज़्यादा detail में सोचते हैं. That is wonderful. And when you grow up, you will realize that this will help you a lot in becoming a very good thinker. But there are so many things that we can talk about अभी ना, कि वो तो laws, वो तो everything that is created by God, right? हम ये बात कर रहे हैं कि once it has been created, तो जो laws उसको govern कर रहे हैं वो क्या है, हम उसकी बात कर रहे हैं, right? हम source पे नहीं जा रहे, because अल्लाह ताला को हम देख नहीं सकते, right? Yeah. तो इसलिए हम कुछ चीजों के बाद, जैसे अल्लाह ताला ने कहा, हम उस चीज को फॉलो कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने कहा कुछ सवाल तुम नहीं उठा सकते, राइट? तो कुछ सवाल हमारे लिए प्रोहिबिटेड है, राइट? ऐसे ही है ना? तो गॉड को लेके हम क्वेश्चन नहीं कर रहे, हम गॉड की बनाई हुई लॉज और उसके बनाए हुए प्रोडक्ट्स, क्रिएशंस, हम उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो क्या हैं. So when we say कि we can trace our elements back to the stars, this cycle is something that God made, right? अब मुझे नहीं पता कि अल्लाह ताला क्या सोच रहे थे, अल्लाह ताला के ज़हन में क्या, नाउज़ुबिल्लाह, I mean I can't go there. But मेरी अकल, मेरी आंखें, अल्लाह ताला ने जो मुझे अकल दी जिससे मैंने ये बनाया है, वो सब मुझे अल्लाह ताला की तरफ इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं. Now that is amazing, right? So think about it like this. We're not talking कि अल्लाह ताला ने बनाया. We're saying जो उसने बनाया, how does that work? Okay? ठीक है? Okay. Perfect. So इसलिए मैंने शुरू में कहा था, the laws that he created, he also made us understand those laws. Because आप तारीफ करते हैं, फिर आप शुक्र करते हैं. So that is the beauty of knowledge and understanding. ठीक है? All right. So आप कभी जब यूनिवर्स को देखें तो don't feel sad कि the universe is so big और galaxies इतने billions में हैं और millions में हैं और trillions में हैं और मैं तो इतना पिद्दू सा हूं, तो मैं क्या करूं भाई, ये तो बहुत डिप्रेशन है. पहले मैं भी ऐसे सोचता था. And then what happened was कि I learned कि अल्लाह ताला की एक और, जो मैं कहता हूं कि जो अल्लाह ताला का शुक्र है कि God, देखिए ना ये कितनी स्पेशल बात है, ये कितनी, यानी इस पे सुभान अल्लाह कहना बनता है ना, कि अल्लाह ताला ने आपको मायूसी ना हो कि अल्लाह ताला ने आपको उन्हीं चीजों से बनाया है जो स्पेस में भी हैं. सो आई मीन टू मी दैट, वो मैं अकेला नहीं रहता अब. आई फील कि ओके वाओ, वो और मैं, स्टार्स और मैं, नेबुलास और मैं, प्लैनेट्स और मैं, some of our material is the same. So to me everything is a family. To me everything, अगर मैं शुक्र कर रहा हूं अल्लाह का, तो फिर इसका मतलब वो भी कर रहे हैं. So that is just amazing. So astronomy की मदद से हम इस तरह की चीजों को डिस्कवर कर सकते हैं, and then we can say okay, subhanallah and mashallah, right? So ठीक है. Now if there are any other questions that you would like to ask about this course, about astronomy, about anything else, we have 7 more minutes, तो हम उसमें बात कर सकते हैं. Yes, Khadija, go ahead. Is this related? Khadija, you're breaking up. आपका connection सही नहीं है. You can type your question in the chat, Khadija, and I'll get back to you.
why exactly, like, whoever thought of the idea of calling this system a solar system? So the question is, why do we call it a solar system? Like both of them, who thought of the idea to call it a solar system, and why did they have the idea to call it a solar And system? what made them cause, and what made it? Okay, okay. So I don't know कि सबसे पहले किसने solar system कहा. That's a great question. I think ये इंटरनेट से देखना पड़ेगा. आप देख के मुझे भी बताइएगा. And then why? Because, well, everything goes around the sun. So we think कि सूरज का ये सिस्टम है, and पहले सूरज बना था, फिर planets बने थे. So it's basically सूरज की backyard. सूरज is the king here, right? So solar system. I mean, why not Earth system? Because, well, Earth is tiny and only a moon goes around it. So Yeah, but still, I mean, like, the Earth is the only planet right now existing which has life on it. So why not call the Earth system? that's a good point. There I are- agree with you. there I agree. That's a great point. ठीक है, अगर मेरा घर है, मोहल्ले के अंदर मेरा घर है ना, तो मैं चाहता हूँ उस मोहल्ले का नाम मेरे घर के नाम पे हो. Because अपना घर तो सबको पसंद है भाई. तो there was once a model which like represented Earth as the center of the solar system and all the other planets and the sun orbiting it. But then they changed it like so the sun center of the universe, the solar system, and all the other planets orbited it. right. So वो models हम देखेंगे history of astronomy में. So humans है ना, तो अगर ये चीज मेरे सामने ऐसे शाइनी है ना, तो मैं ये भी सोच सकता हूँ, ये देखिए कैसे लग रहा है, ये देखिए. तो मैं सोच सकता हूँ, oh my god, this is something from outer space. रोशनी तो ये कैसी रोशनी है? But I can also say, wait, this is like a mirror like aluminium foil, and that is why it's creating the. So all sorts of ideas humans can think, right? Earth is in the middle. No, sun is in the middle. No, Jupiter is in the. We can say, we can create stuff from our heads, right? Yes. And that's what a lot of history of astronomy is, by the way, creating stuff from your head. G. Any other questions? Any other comments? So end of the class पे, हर class के अंदर I will also give you a challenge. So वो challenge होगा for you to figure out whatever my challenge is. ठीक है? So अगर कोई एक और सवाल है आप करें, फिर then I'll give you that challenge. No. सर जी. यूरेनस पे डायमंड्स की बारिश होती है ना? मोहित बात कर रहे हैं? यस. ओके मोहित, ग्रेट. सो मोहित, आप मुझे ये बताएं कि अगर आप अपना हाथ फायर के अंदर रख लेंगे तो क्या होगा? जल जाएगा. राइट. लेकिन आपने कभी हाथ रखा तो नहीं है ना? नहीं, कभी कभार हो सकता है कि कभी गलती से लग जाता है. गलती से, हाँ ठीक है, गलती से ठीक है, जानबूझ के नहीं रखना, ठीक है, ऐसे ऐसे नहीं करना, आग के अंदर ऐसे ऐसे नहीं करना. सो यू ऑलरेडी नो कि अगर मैं हाथ अंदर कर लूंगा तो जल जाएगा. व्हाई? बिकॉज यू हैव सीन अदर थिंग्स बर्न. ऐसे ही है ना मोहित? और अगर मेरा दिमाग ना होता तो मैं रख लेता और मुझे पता ही ना होता मेरे साथ हो क्या रहा है. हाँ, लेकिन अभी आपका दिमाग है, ठीक है. आई बिलीव कि आपका दिमाग अभी है, ठीक है. तो अभी आप दिमाग की बात करेंगे. सो मोहित, बिकॉज यू हैव सीन सम अदर स्टफ बर्निंग, सो यू ऑल्सो कंक्लूडेड कि अगर आप हाथ करेंगे तो आपका हाथ जल जाएगा. ओके. इसी तरह वी नो अर्थ के ऊपर के डायमंड्स ऐसे बनते हैं. इतना प्रेशर, इतना टेम्परेचर चाहिए. यूरेनस और नेपट्यून पे वी थिंक कि उनके अंदर जाके इतना प्रेशर और इतना टेम्परेचर होगा. तो वी थिंक कि शायद वहां भी डायमंड्स बने, बट वी हैवंट सीन देम. डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? Yes. But you're not satisfied. What do you mean by hot fire में नहीं डाल सकता? क्योंकि पहले भी मैंने करा हुआ है. जैसे वो वाला कैंडल होता है ना लंबा,
उसमें ऊपर वाला फायर होता है तो फिर बस ये कर लो जल्दी से पानी रखो in case it's on gets on fire और नहीं लगेगा. Yeah, but Yusuf, please don't do that. ठीक है, we will have 18 people burning their hands. ठीक है, so please don't try this experiment at home. Okay. Sir, I've tried it around 20 times before already. Okay, but hey, is astronomy class से you're not getting the message to burn your hands. Okay, that's what I want to put out there. Okay. Okay. Hamza, that is way too cool. ठीक है, that is way too cool. That's too cool for school, Hamza. Okay. All right, challenge of the day. Ready? No. Well, you have to be ready. No. Okay. I can't. So the challenge is for you to note it down. So abhi aap note kar le, and you'll have to figure out the answer to this by the next class, which you will. ठीक है, I'm sure aap log kar lenge, figure out. Now these challenges will be hard, so I don't want to give out a challenge जो आप आराम से कर लें. All right. So note it down, and I'm going to write it down later in the chat also. Do you have to do research on this too, right? Yes, obviously, वरना आपसे आंसर नहीं मिलेगा. Okay, ठीक है, ready? All right. What calculations did Al-Biruni do to figure out the size of Earth? Oh, yes. I'm going to write this down in the chat also. But sir, I think I do know the answer. I did something like this before. Okay. Now remember, it's a challenge. So अगर आपको आंसर आता है, you will have to present the answer, and उसके अंदर सारी चीजें आपने make sure करना है कि हों. ठीक है? Because you get 1 month to do it, guys. That's a long time. Wait, we have what? You will get 1 month to do this challenge. Why What? Not a week. Not a week. So you only come on the first of your Saturday. So my classes, Miss Aisha, I think that is what we decided कि हमारी classes जो हैं वो once every month. Yes, first Saturday of every month. So do we have to make like a presentation on this or just write it? Up to you. Completely up to you. Okay. So जो I मोहम्मद got the question. I got the लिखना है, answer. I got the answer. तो I will question you back on this. So again, I got the answer. I got prepare the करें, answer. right? Sir, can you repeat the question? Challenge. जी मैं chat में लिख लूँ. History में हमने पढ़ा I got the question. that he used trigonometry, whatever you call it. That why you don't need to नहीं जी. find out his Where did you do it? ठीक है. So when you will be addressing this challenge next month, and by the way याद रखिएगा, ठीक है, हम पहले ये challenge address करेंगे and then we'll go to the class. You will get 5 minutes to talk about it, and then the next 2 to 3 minutes मैं आपसे questions करूंगा, and then we'll see कि what can we learn from each other. That is the purpose. ठीक है. So you can use all the Google and Wikipedia that you want, but then question answer होंगे so that हम उसको humanize कर सकें. Okay, this is not about copy pasting. It's about making it human, locally understandable. That is what we want to do. ठीक है, ठीक है. And also, by the way, जो challenge अगर आप note करें, the one that I've written, it also has the second question in it. तो वो भी Yes, part A and part B. I've narrowed them down. All right, ठीक है जी, चलें. We'll wrap this session up, and thank you, Miss Aisha, and everybody जो यहाँ पे थे. So this is the number of students that we're going to get, around 14 people. Yes. Yeah, around 15 to 16 because someone also wants to join in next week. Perfect. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. So hopefully in the next session, अगर तो cloudy ना हुआ, because Islamabad में आज थोड़ा सा it's a little hazy, but धूप नजर आ रही है. Yes. लेकिन next time we will see the sun and sunspots
through this telescope. Okay. Okay. Thank you, Sir Roshan. Thank Sorry, you. अगर Allah कोई Hafiz. question है तो I would like to address it इससे पहले कि मैं जाऊँ. Was there a No, question? I'm saying thank you so much. Oh, no, thank you. Thank you. All right. Thank you for Thank having you. me. Allah Take Hafiz. care. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Love you, sir. Love you, sir. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Okay, children, I have posted question in WhatsApp group as well. So you can ask from your parents the challenge questions. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, everyone. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. So inshallah, we'll meet again for these sessions next month, December 1st week, first Saturday. But as you all know, that every Friday and Saturday as well, every Friday and Saturday, we do have other sessions. So those who want to join, they can come and join us for Quran and Sira classes. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam.